Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn the future continuous tense. So we have already completed all the present tenses and all the past tenses. Now we are starting the future tenses. And today's topic is the future continuous tense. This is the important topic. This is the episode number 10 of our tense series. Episode 1 to 9 have already been uploaded. I have also created a tense playlist. You can check that playlist and learn all the tenses in one place. These tenses are very important for spoken English. Some people think that only a few tenses are enough, but I believe that everyone who wants to speak English fluently should know all the tenses. Whenever you need to talk about a situation, you can use the correct tense with confidence. That is why learning all the tenses is important. Tenses play a very important role in spoken English. Now, in my roadmap, I have already told you about the four most important areas: tenses, parts of speech, phrasal verbs, proverbs, and idioms. These are the four important things that every English learner should know to speak English fluently. Let's start today's lesson and learn future continuous tense. The basic question is why we use future tense in spoken English. So the answer is so simple. To talk about an action that will be happening at a specific time in future. कोई भी काम जो हमने फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम में फ्यूचर में हमने उसको खत्म करना है या कर रहे होंगे, उसको बताने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे. जैसे कि आई विल बी स्टडिंग एट 8 PM टूनाइट. मैं रात 8 बजे क्या कर रहा हूँगा? पढ़ रहा हूँगा. शी विल बी ट्रेवलिंग टू दिल्ली टुमारो मॉर्निंग. वो कल सुबह दिल्ली के लिए यात्रा कर रही होगी. तो इस तरह के जो टेंसेस होते हैं जो फ्यूचर में आगे कोई क्या कर रहा होगा, प्रेडिक्शन जो बताते हैं कि ऐसे वो कर रहा होगा किसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. उसके लिए यूज किया जाता है. अब आ गई इसके फार्मूला की बारी. तो फार्मूला बहुत ही सिंपल है. पहला है पॉजिटिव. पॉजिटिव में क्या होगा? पॉजिटिव में सब्जेक्ट पहले आएगा प्लस विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. हमेशा जब कभी भी रहा रही ऐसे वाक्य होते हैं, ऐसे जो हिंदी में हम वाक्य बोलते हैं, वैसे तो इंग्लिश को ही हमेशा इंग्लिश टू इंग्लिश ही सीखना चाहिए. कभी भी हिंदी से ट्रांसलेट करके नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि ट्रांसलेशन से हमारी जो फ्लुएंसी है वो ब्रेक हो जाती है. तो कभी भी अगर आपको दिख जाए कि आईएनजी है तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी. और पहले जो ट्रेडिशनल इंग्लिश थी उसमें विल और शैल का यूज होता था, बट आजकल मॉडर्न इंग्लिश में सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, हमेशा विल का यूज होता है. अब नेगेटिव में क्या हो जाएगा कि जो विल नॉट बी है वो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में, नेटिव स्पीकर की तरह आपको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में यूज करना है. वॉन्ट बी, सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. क्वेश्चनेबल में क्या हो जाएगा कि विल पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आ जाएगा बी, और उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी. ओके, तो ये थे सिंपल फॉर्मूले. तो सिंपल फॉर्मूले हैं, आप इनको अपने सेंटेंसेस में बनाइए. कम से कम 5 सेंटेंस जो है एवरी पॉजिटिव नेगेटिव और क्वेश्चन को लेके आप बनाने की कोशिश कीजिए. Avoiding interruptions. Now let's understand the first use of future continuous tense. Avoiding interruptions. We use a future continuous tense when we want to tell someone that we will be busy doing something at a specific time in the future. So look at the example. Please don't come at noon. I will be hosting a meeting. Here the speaker is informing someone that at 12 p.m. a meeting will already be in progress. That's why the speaker doesn't want to be interrupted. Instead of saying, please don't come at noon, I will host a meeting, we say, please don't come at noon, I will be hosting a meeting. This sounds more natural because it focuses on the activity that will be happening at that specific time.
Overlapping actions. Now let's understand another important use of the future continuous tense, overlapping actions. We use the future continuous tense when two actions happen at the same time in the future. One action is already in progress when another action happens. For example, I will be studying when you call me. Here, I will be studying. Future continuous, ongoing actions. You call me. Present simple actions. This means that when you call me studying, will be already be in progress. So this is called overlapping action. Polite inquiries. Another important use of the future continuous tense is making polite inquiries. Sometimes instead of asking a direct question, we use the future continuous tense to sound more polite, friendly, and less demanding. For examples, will you drive me to the airport? This is direct, demanding. But if you say, will you be driving? It is casual, more polite. This sounds polite because you are simply asking about the person's future plans. Okay, so native nuance, sounding more natural like native speakers. The future continuous tense is often used by native speakers because it sounds softer, more natural, and less direct than other future forms. Sometimes both sentences are grammatically correct, but native speakers prefer the future continuous version in conversation. For example, will you come to the party tonight? This is incorrect sentence. Sounds not so polite. But if you say you will be coming to the party tonight, this sentence sounds more friendly and conversational. So, native nuances are fourth situation is the fourth situation that is sounds more natural and less demanding. The third level is advanced level, predicting the present. For example, don't call John now, he will be watching the football match. कि जॉन को अभी कॉल मत करो, हो सकता है वो मैच देख रहा होगा. कि आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हो, प्रेजेंट को प्रेडिक्ट कर रहे हो, आप प्रेडिक्ट प्रेजेंट को कर रहे हो, प्रेजेंट को कर रहे हो, बट you will use the future continuous tense. First you use the simple present tense and then you in second sentence use the future continuous tense for predicting the present. Now the advanced level is high level prediction. High level prediction using still for future trends. For example, in 2035, scientists still be looking for a cure. This is the so high level prediction. मतलब कि 2035 की बात कर रहा है कि साइंटिस्ट जो है वो इस चीज़ का इलाज ढूंढ लेंगे, सर्च कर लेंगे. तो ये बहुत ही आगे के फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहा है. तो इसके लिए क्या यूज़ करोगे? स्टिल. साइंटिस्ट विल स्टिल बी लुकिंग फॉर ए क्योर, कि वो अभी भी इलाज ढूंढ रहे होंगे तब तक. कब तक? इन 2035. तो ये है हाई लेवल प्रेडिक्शन. Combining with the modal verbs, replace will with may, might or could. For example, I might be working from home next week. इस तरह से कोई और एग्जाम्पल ले लो. It will be raining after 1 hour. I can also say that it may be raining after 1 hour. तो इस तरह से आप मॉडल्स जो हैं मे, माइट, कुड को रिप्लेस कर सकते हो, विल को रिप्लेस कर सकते हो मॉडल्स के साथ. Now the time for Easter egg quiz. Fix this sentence for a job interview to make it sound polite. The correct version is, would it be possible for you to use the projector tomorrow? This is so polite version and natural way. If this video helped you, smash that like button right now, subscribe to the channel and turn on the notification bell so you never miss our spoken English secrets. See you in the next lesson. Till then, bye bye.